Well, Learners, today is 10th of Feb and it's morning 10:40. And I just thought I should record this video because I'm finding a pattern in market. And you know that whenever I find something interesting to talk about, I do come and record these videos for your benefit. So let me just do a screen sharing and discuss क्या हो रहा market के अंदर में and whether it is a good market for us to participate at this juncture. So here we are. So let's talk about Nifty first. So Nifty, it went down below 200 moving average, stayed here. It was quite a dicey market, and this was the time, remember, जब डॉलर ट्रम्प अपने बहुत ही एग्रेसिव मोड में थे. And after tariff clarification came, market went up. It touched this high of 26,300, then corrected, ended the day around here, and since then, market has been consolidating. The good news is that market has been consolidating with a positive bias, okay, and supported by dollar index. So because dollar index is going down, and again, our view of long-term dollar index remaining down still is there. That's why Nifty भी ऊपर है और जो इमर्जिंग एसेट क्लास है, इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो भी ऊपर है, राइट. Although Nifty has underperformed the emerging market index for the last couple of months. You see, this is Nifty underperforming the emerging market index for the last couple of months. And I think it was purely a tariff overhead, जिसके कारण ये अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था. तो अगर ये परफॉर्म टैरिफ वाला इशू प्रिज्यूमेबली सॉल्व हो गया है अगर, तो फिर मुझे लग रहा है कि वापस से रिलेशनशिप विद डॉलर इंडेक्स गोइंग डाउन एंड निफ्टी गोइंग अप, this relationship can hold true. So possibly market can continue to go up. Okay. एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है विच आई वांट टू शेयर विथ यू. इट इज रिलेटेड टू द रिजल्ट सीजन. सो रिजल्ट सीजन आ चुके एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर में हमने रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है. तो अगर आप स्टॉकेज में इंडेक्स एनालिटिक्स में देखोगे तो यहाँ आपको रिजल्ट नजर आएगा. निफ्टी 50 स्टॉक्स में there are 41 स्टॉक्स इनमें रिजल्ट आ चुके हैं. And this is the year-on-year growth. Okay, so if you see, this quarter actually has given a better year-on-year growth in Nifty stocks than previous 5-6 quarters. Okay, अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी 500 को देखें, तो इसमें भी this quarter, December quarter has given. That means clearly there is a trend now that result recovery or demand recovery at a ground level has already getting witnessed. And December quarter was very critical because उसी का जीएसटी का कट का इम्पैक्ट, लिक्विडिटी बढ़ाने का इम्पैक्ट वो जो है उस क्वार्टर में नजर आता. और जैन फैब मार्च टिपिकली बहुत एग्रेसिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिकॉज मार्च एंड के अंदर में मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अलोकेटेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर स्पेंडिंग काफी रफ्तार से बढ़ती है. तो पॉसिबली इस क्वार्टर ऑल्सो द रिजल्ट में लुक गुड. ओके, तो ओवरऑल from a fundamental perspective, market looks like that there is a demand recovery or fundamental reason for market to go up. Okay, I hope this is clear to everyone. So जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में प्ले करने का, जो टिपिकली एक मोमेंटम पार्टिसिपेंट प्ले करता है, विच आई एम, इज व्हेन देयर इज अ रिजल्ट बैकिंग एंड व्हेन देयर इज अ प्राइस बैकिंग, राइट. दैट इज अ टाइम व्हेन यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट होल हार्टेडली. ओके, तो ये आपको नजर आ गया. इट इज देयर इज अ रीजन फॉर मार्केट टू बी स्ट्रांग. अब अपने सोना चांदी में चलते हैं, because that is important discussion which we were having for many many days. मैंने बात कही थी, इफ यू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चरली अगर आप जितनी दूर से देखोगे स्टॉक को, जितनी दूर से देखोगे, जैसे ये मंथली चार्ट है सोना का, जितना दूर से देखोगे उतना आपको बड़ा मूवमेंट नजर आएगा. ओके, सो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गोल्ड के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ है. ओके, एंड यू रिमेंबर पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बेसिक मैथमेटिकल होमवर्क किया था कि ये $12,000 तक भी जा सकता है. ओके, मैथमेटिकली. ओके, अगर मैं उन सब वीडियोस की बातें वापस से करूं तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो एंगल होता है ना, दिस इज पैराबोलिक, राइट, एंड इट इज नॉट realistic that a thing will constantly go up like this. It will go up, it will correct. The correction can be in two forms. There could be price-based correction and there could be time-based correction. कैसे? आप देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ टाइम बेस्ड करेक्शन क्या होता है. ये जो यहां से यहां गिरा,
ये प्राइस बेस्ड करेक्शन है। बट ये यहां से लेके यहां तक जो इसने समय बिताया यहाँ पे, ये टाइम बेस्ड करेक्शन है। ओके, प्राइस बेस्ड करेक्शन, टाइम बेस्ड करेक्शन, प्राइस बेस्ड करेक्शन, टाइम बेस्ड करेक्शन। और हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी भी फाइनेंशियल एसेट को नेक्स्ट लेवल पे बड़ा तेजी में जाना है, तो उसको ज्यादा प्राइस, ज्यादा टाइम बेस्ड करेक्शन पे फोकस करना है। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर, नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर गया, करेक्ट हुआ, थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, करेक्ट किया, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो डेफिनेटली सोना इज कंसोलिडेटिंग, राइट। वी कैन नॉट से सोना के अंदर में बड़ा ट्रेंड खत्म हो गया है, तो कंटिन्यू विथ योर एसआईपी, डोंट स्टॉप एसआईपी बिकॉज द बिग ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। सिमिलर, बट ऑब्वियसली सिल्वर इज फार मोर हाई बीटा, रिस्क ज्यादा होता है, स्लिपरी ज्यादा होता है। तो सिल्वर भी ऊपर गया, करेक्ट किया। पर यहां पर जो ये इतना फियर्सली ऊपर गया था, उतना ही फियर्सली ये करेक्ट करेगा, राइट। लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट वर्क्स एवरीवेयर। तो इफ इट गोस अप वेरी फास्ट, इट विल कम बैक इन मच मोर स्टीपर वे, and it will consolidate here. So my view is that Chandi now from 71 is the new base of Chandi, okay? And possibly Chandi will consolidate here for some time before it starts the new Teji. And the new Teji of Chandi, again, most likely Chandi is still in a long-term strength, okay? The new Teji of Chandi will come when it will cross this level, 88. तो mark these levels. इसको अलर्ट करके छोड़ देते हैं अपने। 88 के ऊपर जब चांदी जाएगा, उसके बाद वापस से एक नई तेजी बन सकती है, और कोई भी रीजन से बन सकता है, वी डोंट नो। कोई भी एक्सपेक्टेड रीजन आ सकते हैं। बट अभी आज के रेट में देर इज अ टाइम बेस्ड करेक्शन विच इज एक्सपेक्टेड इन चांदी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर ने अपन लोगों ने एक व्यू बनाया था कि यहाँ से तेजी लग रहा है, अगेन फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बट कॉपर एज एन इंस्ट्रूमेंट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो ये आपको परेशान भी कर सकता है, काफी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कॉपर के अंदर में एमसीएक्स फ्यूचर्स में काम करना रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए बेटर है कि जो कॉपर स्टॉक्स है उनमें एसआईपी करना, जो कि मैंने आपको कहा था। और वो अगर आप कॉपर में व्यू लगते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। तो रिमेंबर दिस, मल्टी एसेट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज जब आप मल्टी एसेट 1000 फीट 10,000 फीट से जब बाजार को देखते हैं ना, तो आप अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, अलग तरह का एक वर्किंग स्टाइल अपने लिए डिफाइन करते हैं, विच मेक्स द इंटायर वर्किंग वेरी वेरी स्मूथ। तो लर्न दिस साइंस। अच्छा, बाय द वे, वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट इन गोवा, जो हम लोग हर साल एक बार करते हैं, जहाँ पर हम जितने भी मेरे अच्छे फेस टू फेस के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको रिसेंटली मैंने कवर किया है, जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ और आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप उनके साथ में नेटवर्क कर सकते हैं। तो साल में एक ही बार करता हूँ, और करीबन 200 से 250 लोग आते हैं। तो यू ऑल्सो कम ओवर, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, फेस टू फेस गोवा। आप आइए और मेरे साथ 2-3 दिन स्पेंड कीजिए, एक्सपर्ट्स के साथ समय बिताइए, अपना पीयर ग्रुप बनाइए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए अपना, बिकॉज फाइनली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो होप टू सी यू गाइस सून, और इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, और बाजार में बस डेटा को ट्रस्ट कीजिए, बाकी सब नैरेटिव्स है, कुछ पैसा नहीं बना के देता है डेटा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।